right? Good or bad? When? Well, एक तो तब होता है when a bigger event happens. Say मेरा बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, ठीक है, मेरा कपड़े का धंधा है, फ्लॉप हो गया, मैं 2 करोड़ रुपए मर गए 2 करोड़ रुपए मर गए। अब भाई बहुत बुरा हुआ, पर अगले महीने मेरी 6 करोड़ की लॉटरी लग गई, भूल जाऊंगा। 6 करोड़ की लॉटरी छोड़, मेरे मामा जी की तबीयत खराब थी, ठीक हो गई, ओ भूल जाऊंगा। पीक एंड, लास्ट पीक क्या थी तुम्हारे इमोशनल एक्सप्रेशन में? एक तो वो चीजें याद रहती हैं जिससे तुम पुरानी चीजें पीछे चली जाती हैं। दूसरा तब होता है when you've actually given words exactly to what happened, so you understood what has happened. The function of memory, the function of what keeps a record of the past is not to detail out everything that's happened in your past. It is not, यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें स्कूल में सिखा देते हैं मेमोरी का मतलब ये है इसको यूज करके रट्टा मारो उल्टी मारो, तो तुम्हें लगता है मेमोरी का पर्पस है एक लेवल पे इंफॉर्मेशन स्टोर करना। नहीं, मेमोरी का पर्पस है लेसन स्टोर करना, विजडम, कि क्या किया जाए जब ये होए, कि भाई मेरे को ये बताओ कि जिस तरीके से मैं ऑटोमेटिकली बिहेव करने वाला हूं वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि 90% बिहेवियर तुम्हारा ऑटोमेटिक है, तुम्हें नहीं पता, वो मेटाकॉग्निटिव नहीं है, वो ऑब्जेक्ट लेवल पे काम करता है। अगर किसी ने इतनी साइकोलॉजी फंडामेंटल्स में मेरे साथ पढ़ी थी तो, राइट, तुम्हारा 90% बिहेवियर ऑटोमेटिक है। तुम खाना खाते भी नहीं सोचते मैं राइट हैंड से ऐसे लाता हूं कि राइट हैंड से ऐसे लाता हूं, नहीं सोचते, ऑटोमेटिक है। एंड यू वांट टू नो वेदर योर ऑटोमेटिक बिहेवियर इज ऑल राइट। सो इमेजिन समबडी ईटिंग एट अ रेस्टोरेंट और वो खा रहा है, उसके हाथों पे गंदगी लगी है, वो चूस रहा है अपने हाथ जैसे लोग करते हैं, नॉर्मल है हमारे इंडिया में। तो सपोज ये विदेश में कर रहा है आदमी, हाइपोथेटिकल, ठीक है, एक आदमी कहता है यू, आदमी को सडनली रियलाइज होता है फक मैंने कुछ गलती कर दी, फिर वो उस बारे में ओवर थिंक करता है, मैं बेवकूफ हूं क्या, मेरे को पता नहीं है क्या, मैं फिट कैसे होऊंगा यहाँ पे, मेरे को नहीं समझ आ रहा, शर्म आती है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी भी टाइप का एग्जाम्पल ले सकते हो। तुमने कोई जोक क्रैक किया, पूरी ऑडियंस देखे क्या करा है इसने, एंड यू सडनली लाइक ओ शिट मैंने क्या कर दिया। सो योर माइंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई डू रॉन्ग एंड हाउ डू आई फिक्स इट, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पास्ट। द पास्ट इज अ सीरीज ऑफ लेसन्स दैट शेप हु यू आर, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज लेसन्स, अदरवाइज योर मेमोरी इज नॉट डन इट्स जॉब एंड योर थिंकिंग ब्रेन इज रियली सेकेंडेड, इट्स नॉट एज इंपॉर्टेंट एनीमोर बिकॉज इट्स नॉट डूइंग व्हाट इट्स सपोज्ड टू डू। इट्स सपोज्ड टू प्रोसेस द पास्ट, इट्स सपोज्ड टू मेक सेंस आउट ऑफ इट, अ नैरेटिव दैट फिट्स, एंड द ओनली वे यू नो इट फिट्स इज इफ यू नो इट हियर। तेरे दिल में जाके लगेगा हाँ ये ठीक है, तू भूल जाएगा। और सुन एक बात और, this is not a one-time job, bro. It's not easy when big things happen, when things that are way bigger than yourself happen, when things that happen you don't know what has just happened. There are parts of you that are exploding because you have no concept of what those things are. I get it. It'll take many iterations. But let's begin, no? ये चीज तुम लाइफ में कभी भी यूज कर सकते हो. Whenever you've had a big event in life and you don't know what to make of it, wait a couple of months, write about it. Write about it in the format we give you. And then tell me how it makes you feel. You'll automatically talk about other things. That's some of the most interesting parts. Like अब वो निकल गया, वो कचरा आ गया बाहर. With me, for instance, very recently when I was recording, I was talking about Andrew Tate a lot, right? It's so funny. After I was done doing the critical analysis, where I was like, this is where he's wrong, this is where he's wrong, this is where he's wrong, he shouldn't say this, this is absolutely abhorrent. I was suddenly like, now I can talk about, to myself, not just to audiences, to myself, I was like, now I can talk about things I like about him. Right? That part's been processed. I've said what I wanted to say. It's stored in my head. Now I don't need to worry. Not even stored in my head. I've understood what I need to avoid in this person. That's how your mind works, bro. That's how your mind works. Think about a fight that you're getting into with your girlfriend or boyfriend. The most proximate example. पहले गुस्सा आ रहा होता है, एक बार बोल दिया एक बार, तू ये है तू वो है, तुम्हें पता लग गया उसको हर्ट भी हो गया. अब वो बोलने का मन नहीं, अब मन है कि भाई वापस आ जा, अब लड़ाई खत्म करते हैं, क्योंकि सिर्फ सुनाने का मन था. इस लेवल पे तुम्हारा दिमाग काम करता है. एंड यू वांट टू बी इन अ प्लेस वेयर ये सब टूट के डिस्पोज ऑफ हो जाए. तुम्हारे पास्ट के बिग इवेंट्स अब रजिस्टर्ड है, प्रोसेस्ड है. एक्टिव एलिमेंट्स नहीं है जो तुम्हारे डे टू डे में इंटरफियर करते हैं. तब ब्रेकअप हुआ था इसलिए आज डेस्परेशन नहीं दिखाना चाहिए. तब लॉस हुआ था मतलब आज फियर नहीं दिखाना चाहिए. कब दिखाना चाहिए फियर और कब दिखाना चाहिए किसी अमाउंट का एंगेजमेंट, वो समझना इंपॉर्टेंट है. और वो कहानी शुरू होती है पास्ट के साथ. सो दिस इज वाई वी आर फोकसिंग ऑन द पास्ट फॉर नाउ यू विल गो टू द असाइनमेंट. चलो आ जाओ. Okay, so while we're talking about the past, one of the things I cannot leave unaddressed is failure, right? Because a lot of the people who do not move forward is because they come across a failure that's too hard to get up from. Now, this failure could actually happen in their lives. They could actually try something and fail, or they've seen something like this happen to one of their people, or they're just generally afraid of that failure. And so you have to understand the nature of failures very properly, okay? और इसको समझने के लिए बेस्ट चीज है कि एक बार ना सब चीजें उठाओ.
दुनिया भर की, और इसको एक वीडियो गेम फॉर्मेट में ले जाओ। जीटीए खेल रहे हो तुम, जीटीए जो खेली है, वाइस सिटी, लिबर्टी सिटी जो खेली है, 5, 4 जो खेली है, तुम जीटीए में हो। जीटीए में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है? एक है बाहर की दुनिया, जो तुम्हारी बाहर की दुनिया अभी, जहां सब कुछ हो रहा है? क्लब भी है, बार भी है, बाल भी कटवा लिया, खाना भी खा लिया, मार भी दिए, सब सब हो रहा है बाहर वहां, ठीक है। फिर एक लेवल पे तुम्हारा माइंडसेट, और तुम्हारा माइंडसेट पर मिशन डिपेंड करता है। अब तुम उसी जगह पे दूसरी बार जाओगे गेम में, पर तुम्हारा माइंडसेट कुछ और होगा। इस बार मैं इस बंदे से बात करने आया हूं, किसी को मारने नहीं आया हूं। जीटीए का बता रहा हूं भाई, वायलेंस का लेसन मत लेके जाना यहां से, राइट? दैट इज योर माइंडसेट, दैट्स द बेस प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड व्हेन यू आर अप्रोचिंग समथिंग। तुम्हारे राइट साइड में एक मैप है, जिससे तुम्हें पता है सब कुछ क्या है और कहां है। उस मैप को तुम अगर समझना चाहो रियलिटी और मैप के सेंस में, तो बाहर की रियलिटी और ये लैंग्वेज है, बट उसमें नहीं घुसते, वो कॉम्प्लिकेटेड मेटाफर है। फेलियर क्या है? मोस्ट फेलियर्स जिससे लोग डर जाते हैं, मोस्ट 99.99999% failures is mission failed. What do you do once mission is failed? You try again. But Prakhar bhai, it is so huge. How do I try again? How do I go about doing it again? Well, let me tell you 2 interesting lessons from philosophy that will help you understand what to do. In GTA, you've entered a room, you look at a guy, you're trying to shoot, somebody shoots you from the side, you're like, shit, mission failed. Now, next time, what do I have to do? I have to look that way. बिकॉज वहां से एक बंदा आ रहा है। प्योर वीडियो गेम एनालॉजी है। हाँ, तुमने एक एक्शन लिया बाहर की रियलिटी में, तुम एक सिंगल प्लेयर हो, तुम गेम खेल रहे हो, तुमने गेम वर्ल्ड में एक एक्शन लिया, तुम्हें गेम वर्ल्ड से एक फीडबैक आया और वो फीडबैक नेगेटिव था, तो तुमने क्या बोला? इस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करो, नेक्स्ट टाइम इस चीज का ध्यान रखना है। अभी इमोशंस बीच में नहीं है ना, तुम बहुत ही डिटैच लेवल पे देख पा रहे हो ये चीज। इमोशंस बीच में आते तब कॉम्प्लिकेट होता है, बट इमोशंस बीच में नहीं है, तुमने बहुत सिंपल लेवल पे चीज समझ ली। Bad feedback is equal to incorporated. Good feedback is also equal to incorporated. Bad feedback is equal to समझ जाओ ये हो सकता है। The Stoics understood this very well. If you look at what, I think this is Marcus Aurelius who said, we suffer more in our imagination than in reality. What he's talking about is we suffer more in our narrative than in our reality. And what he understood also very well, the Stoics overall, is the idea that the obstacle is the way. One way to put it is that अगर तुम्हें if the guy did not shoot you at level 4, you would have never won level 10. Or if the guy would have never shot you at level 4, you would have never passed level 4. The obstacle is telling you you are on the right path. The obstacle is telling you इस information का कुछ करना है. Chess games happen this way. इस बंदे ने ये मूव करी, could be an attacking move, I could get emotional about it, और सी की इससे इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, इस मूव से ये आगे क्या कर सकता है। ऑब्स्टिकल्स आर लाइक दैट। व्हेन यू ब्रेक अप विथ समवन, व्हेन यू डोंट गेट इनटू द कॉलेज यू वांट, व्हेन यू डोंट गेट द जॉब दैट यू आर लुकिंग फॉर, व्हेन यू आर नॉट एज अट्रैक्टिव एज यू विश यू वर, द लेसन इज द इंफॉर्मेशन, एंड द इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी इंक्लूडेड इन योर नैरेटिव टू वट एवर एक्सटेंट। ऐसा नहीं यही नैरेटिव बन गया, थोड़ा बहुत भी हो सकता है। सो फॉर इंस्टेंस व्हाट आई रियलाइज इज दैट दिस पर्सन वाज ग्रेट फॉर मी, बट आई एम नॉट इन अ प्लेस वेयर आई कैन टेक दिस मच चिक चिक। मेरे को अभी काम पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। जब मेरी फैमिली होगी, बच्चे तो करेंगे ही चिक चिक, तब तो मैं हैंडल कर सकता हूँ शायद उस लेवल पे, उस स्टेज पे, उस टाइम पे, जब मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं, बट अभी मैं नहीं हैंडल कर सकता। दिस ह्यूमन नॉट दैट गुड, आई अंडरस्टैंड, आई शुड नॉट बी विद पीपल लाइक दिस। दैट इज द लेसन। The obstacle has become your way. You have put obstacles together to be like, अच्छा मैं सही रास्ते पे हूं, मेरे को फिगर आउट हो रहा है। वो नहीं है एक बड़ा फेमस मीम, क्या फेलियर नहीं, ट्राइंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड फन वाला जो है, ऐसे ही कुछ मीम है ना, अगर अंश डाल सको डाल देना। इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। द ऑब्स्टिकल इज द वे, इट्स गिविंग यू इन्फॉर्मेशन, इट्स टेलिंग यू दिस इज ऑल राइट, इट्स टेलिंग यू what you need to change a little bit to actually make things happen. The problem is that emotions get in the way. We start wanting to change our narrative and call ourselves failures, और शिट ये हो गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं इससे कैसे निकलूं, फक, अब तो मेरी पूरी दुनिया क्लोज हो रही है। और जैसे ही डर आ जाता है, डर आने के बाद क्या होता है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स नैरो डाउन हो जाते हैं, तुम सिर्फ फेलियर देख पाते हो, और अब एकदम क्लाउडीनेस आ गई है, फियर की वजह से क्लैरिटी खत्म हो रही है, और सब बर्बाद हो जाता है। द प्रॉब्लम इज फेलियर के टाइम पे इमोशंस बीच में आ जाते हैं। तो एक तो बात ये हो गई कि भैया फेलियर बढ़िया है, क्योंकि उससे तुम्हें पता लग रहा है लेवल 10 की तैयारी कैसे करनी है, क्या पैटर्न्स हैं इस गेम के, क्या इस इंफॉर्मेशन को मैं इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं अपने काम में। और दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया एंटी फ्रेजिलिटी का, विच इज समथिंग तालिब केम अप विद।
Nassim Taleb, if people do not know him from Twitter or from his books, Taleb has this idea and he was the first one to give it a word, and the word became popular since, and you'll find it everywhere since. The word is anti-fragile, and anti-fragile is based on the idea of the Hydra in Greek mythology. Hydra in Greek mythology is a monster, is a beast with many heads, and the only way to kill it is to chop off its heads. But if you chop off its head, it grows two heads instead. और ये चीज अगर तुमने समझ ली ना फेलियर के साथ क्या करना है, तो तुम हाइड्रा बन जाओगे ना, तो भाई फिर ना कोई ना रोकने वाला नहीं रह सकता भाई. बिकॉज द थिंग इज, इफ यू टेक फेलियर एंड नॉट जस्ट मेक इट योर वे बट यूज फेलियर टू मेक योर वे ट्वाइस एज स्ट्रांग. Now, how you do that for each problem is an individual thing. How you teach your failure to motivate you, or how you teach yourself with your failures, how you allow your anger and your hate and your unhappiness to be channelized into something productive, how you channelize everything you've never succeeded at to become this one thing you succeeded at so brilliantly. It depends context to context, but these two vocabulary terms are very important. The obstacle is the way that it's not just that you don't have to shy away from failure, but failure is in fact good. It's telling you what you need to do better, but also that failure can make you anti-fragile. I don't know if I've explained the idea of anti-fragile properly, so I'm going to spend 30 more seconds in explaining this to you, and then we'll move forward with other explanations. So Taleb says, तुम एक ग्लास लो, ग्लास को जमीन पे तोड़ो, वो टूट जाता है, फ्रैजाइल है. तुम एक स्टील का ग्लास लो, जमीन पे फेंको, वो नहीं टूटता, वो रोबस्ट है. और यहां तक हमारी वोकैबुलरी लिमिटेड है. बट तुम बच्चे लो और बच्चों को बोलो बाहर गार्डन में जाके खेल और उन्हें गिरने दो, उनसे उनकी बोन स्ट्रांग हो जाती है, वो एंटी फ्रैजाइल है. तुम जवान लोग लो, उन्हें बोलो जिम जा और अपने मसल फाड़, और उस फटने से वो मसल और स्ट्रांग और बड़े हो जाते हैं, वो एंटी फ्रैजाइल है. वो एक इस टाइप की चीज है जिसपे जितना प्रेशर डालो, जितना फेलियर दो, कहते हैं ना रेप टू फेलियर एक्सरसाइज में, उतना वो और बेहतर बन जाता है. एंड देयर आर सिस्टम्स लाइक दैट यू कैन क्रिएट. Because bro, fact of the matter is, I understand when failures this close it seems very big, when tragedy is this close it seems very big, but on a long enough time scale it's a lesson, my G, and a lesson that can make you twice as strong. How we do that, उसका step one process है ही ये कि पहले तो उसको समझ लो ना in all its depth कि है क्या ये, फिर तो तुम देख पाओगे अच्छा है ये, अब इस पे काम कैसे करें. उसके बियॉन्ड बस हिम्मत रखनी है. And chin up, my lad, we're walking straight. We're walking straight home, nowhere else. Chin up. We just walk straight. Nothing's coming in the way. No one. That's it. This is what you need to do with failures and deep pushes and punches that you receive in your lifetime. Incorporate them. It's very difficult. It's easier said than done, but that's all that is worth to life, bro. Everything else is हजारों लाखों की मीडियोकर भीड़ दुनिया के बाहर मजूरों में खड़ी है, तालियां बजा रही है. तुम्हें वो होना है या जिसके लिए तालियां बज रही हैं वो होना है, ये तुम डिसाइड कर लो. Hello there, I'm Asim and welcome to Mastery Map. I will be your co-host for this program. Let's walk through assignment 0, your backstory. Every main character has a backstory. So will you now. Once you've enrolled, you should find your course pop up here inside your My Courses. Once you've logged inside Learn with Prakhar, let's go ahead, open the course. Okay, once you're inside, the first contents that you will see is this message which asks you to join the WhatsApp broadcast community. I really encourage you to join that so that you don't miss out on any updates. Once you're done with that, let's proceed. Watch these videos. Now these videos are very important before you attempt the assignment. They will help you with the mindset that you need when you start writing. To download the assignment, simply come here, click here, and it will download the template on your desktop. If you're on desktop, it will download it in your downloads folder, or if you're on your mobile, you will have to save it in your files, and then you will need a presentations editor like a PowerPoint or
Keynote. In this case, I'm using Keynote. So let's go ahead and open the assignment. The backstory. Now, most of the stuff is self-explanatory. This is an introduction to the assignment, and let's proceed to begin. The assignment will from time to time ask you for certain rituals. Even one of the rituals that I would want you to do is, before you even start with the assignment, I want you to clear out your space, your desk, have a bottle of water, preferably start it in the morning so that you're fresh and the tirings of the day have not burdened you. You can start writing with a very fresh perspective. Close your eyes and take about 10 to 15 minutes. Take a rewind of the last 12 months. Go through the beginning of the previous year. Starting from January, how did the year progress till December? What were the events that occurred? Once you have that story in your head, once you have visualized it, daydreamed it, now I want you to proceed and start listing your events down. Give a suitable title and just create an exhaustive list of everything that occurred, everything that pops your mind. Once you have like a exhaustive list, let's say 5-10 events that you can remember of, I want you to select the 3-4 most significant events which are worth noting, which are so important that they still incite a certain emotion in you. कि वो कुछ अभी भी कुछ उनको याद करने पे कुछ feel होता है. It can be either positive or negative. Every main character goes through struggles and goes through victories. That essentially builds the character, right? So similarly, आपके जर्नी में भी पिछले 12 महीनों में जो भी इवेंट्स हुए हों, अच्छे या बुरे, सारे लिस्ट डाउन कीजिए. When you have selected the 3-4 events, you can go ahead and start describing these events. Now, जब आप इन events को describe करने शुरू करोगे, I want you to write your heart out. Write as much as you want, as long as you want. If you need more space, this is how the template looks. Add your event title. Let's say fictional, of course. The breakup. And start writing. I was devastated. The beginning. That is the case with most people who go through a breakup. So write your story down. Write everything that comes to your mind about this event. Once you're done writing, okay, this is important. The next step would be to edit it. Edit it and make it shorter. Trim out the fat. Keep only the essential stuff. If you need more space to write, you can simply come here, add a slide, and continue writing. Do this for all 4 events that you selected in exercise 1. Moving on, exercise 3 will ask you to reflect back on these events. Now you've आपने एक ब्रेन डंप कर दिया, जो भी आपको याद आ रहा था, जैसे भी वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए थे, आपने लिस्ट डाउन कर, आपने पूरा उसके ऊपर एक ऐसे टाइप का लिख लिया. फिर आप शुरू करोगे उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करना, उनको एनालाइज करना. एंड टू हेल्प यू डू दैट, वी हैव डिजाइन्ड सर्टेन प्रॉम्प्ट्स. Now, you will find examples throughout the exercise. They are kept very short, fictional of course, so that they do not contaminate your own thinking. Example, describing the first event with these 3 prompts. Now you can begin writing your own reflections. Answer these questions for all 4 events.
and then finally we approach to conclusion. To write the conclusion, now ये सारी चीज़ें तो हो गई, हमने अभी reflect भी कर लिया उनके ऊपर. How do you look at the world around you now? What was your understanding before and after? How do you see the people around you? How did they change your beliefs? What were your learnings throughout? If I had to make a summary of the year, what would it be? This is your opportunity to write a summary of your previous year. Some things to note. जब आप एक एक एक्सरसाइज में से एक एक इवेंट लिख रहे हो, take breaks. Once you have described the first event at length, take a break. Take a break of about 30 minutes, 1 hour. Go for a walk. Let your writings sink in. Preferably, if you can sleep over it, the best. And that is about it. Conclude the year. Save your document. Let's go ahead, save it. To submit the assignment, you go back to the Learn with Prakhar portal. Choose a file from here. My file is in my downloads. Select it from here and submit. And you're done. I hope you have a very good time writing this assignment, and I'll catch you on Friday, 7:30. Ciao.